हेलो एवरीवन ମୁଁ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଇଆଇଟି ବରଗଡ଼କୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବା CPET 2025ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ବିଷୟଟି ରହିବ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆମେ PYQ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ରୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା CPET 2025ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ देखो पैटर्नटा कौन रोचे फुल मार्क होची 100 मार्क्स एवं टाइम ड्यूरेशन रोचे 80 मिनिट 80 मिनिट मध्य हमको शॉर्ट क्वेश्चन करवार अच्छी एवं जदि आम करेक्ट आंसर करुचे ताहले 1 मार्क मिलो और जदि आम रॉन्ग आंसर करुचे देन ताहले नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी नेगेटिव मार्किंग रोचे -0.25 इट मीन 1/4 तो सही हिसाब से हमको अटेंड करने को पड़ो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 रे अच्छी Which of the following is not included in decision that every society must take? एथि मध्य कोटी गोटे सोसाइटी इकोनॉमिक डिसीजन नहीं न थाए आम जाने गोटे सोसाइटी 3 फंडामेंटल डिसीजन नहीं थाए जमती कि व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बोली आम ताको कहि थाउ। तो से हिसाब रे जदि आम जिबा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज नॉट द डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय द सोसाइटी। ओके देखो मुझे एक्सप्लेनेशन दे दीजिए द करेक्ट आंसर इज सी बिकॉज every society has to take 3 fundamental economic decisions and number 1 is what to produce it means which goods and services should be produced को द्रव्य व सामग्री में उत्पादन करबा कथा। देन पॉइंट नंबर 2 रे अछि हाउ टू प्रोड्यूस इट मीन ताको हम किभली भाव रे प्रोडक्शन करबा किए प्रोडक्शन करबा एवं को रिसोर्सेस यूटिलाइज करके ताको प्रोडक्शन करा जाय पारिबो सेटा होछि पॉइंट नंबर 2 रे। देन पॉइंट नंबर 3 फॉर हुम टू प्रोड्यूस इट मीन्स कहाँ हम प्रोडक्शन करवा हु विल बी द कंज्यूमर आम ताको और हु किए कंजम्पशन से कर। ओके तो यहाँ गला कौन ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3 तो ये मध्य जो ऑप्शन सीटा हूँ करेक्ट आंसर। ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हूँ ये गोटे फ्रेज आमको दिखाई स्टेटमेंट दिखाई से स्टेटमेंटा आम देखा कौ ऑप्शन सहित करेक्ट हो देयर इज नो सच थिंग्स एज फ्री लंच इट मीन्स आम जब कह कौन सी जिनस फ्रीले मिलनी किसी ना किसी आमको कस्ट बा खर्च को आमको करने को पड़ी था। तो से बेस्ट एक्सप्लेन करुँच आम ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट को। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर टू गेट समथिंग वी लाइक वी यूजुअली हैव टू गिव अप अनदर थिंग्स वी आल्सो लाइक एटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ये एक्सप्लेन करुँच। तो से ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर गोटे एक्सप्लेनेशन दे दीजिए करेक्ट आंसर इज सी टू गेट समथिंग वी लाइक वी यूजुअली हैव टू गिव अप अनदर थिंग वी आल्सो लाइक because this phrases emphasizes the concept of the opportunity cost in economics। जदि भी हमको किसी ना किसी फ्रीली मिलूची आइदर गवर्नमेंट प्रोवाइड करूछंती ना किए भी जने जदि हमको प्रोवाइड करूछंती फ्रीली विदाउट एनी पेमेंट ता सत्वे भी ताको प्रोडक्शन करबा पय किसी ना किसी टाइम हला लेबर हला कि मटेरियल्स यूज होइछि निश्चित भाव रे। तो सही रिसोर्सेस को हमको सैक्रिफाइस करबा को पड़ुछि। ओके देयरफॉर नथिंग इज फ्री। ओके तो आमर करेक्ट आंसर टी हम सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई फॉर ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व व्हिच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट इज इक्वल टू आम जानी जिते बेले आम ड्र करूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लिनियर डिमांड कर्व जिते आम ड्र करता आम निश्चित भाव में पढ़ीचे एट द मिड पॉइंट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 एवं आम एक्स एक्सिस नहीं जाऊ ये वाई एक्सिस आम नहीं जाऊ क्लियर। देन ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी द मिडिल पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है। ओके तो करेक्ट आंसर इज डी। देखो ये आम कन्फ्यूजन हो पार आम जब ऑप्शन -1 हम कि 1 हम कि एक्चुअली जो माइनस साइनटा अच्छे माइनस साइनटा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी बा जोटा कि लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करता है। सो देयरफॉर हम जी आंसर 1 टा करेक्ट आंसर हम। ओके बिकज आम नेगेटिव साइन को सब आम इग्नोर करता। तो देखो ये एक्सप्लेनेशन दिखाई क्लियर एट द पॉइंट ए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी एट पॉइंट ई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 एट द मिड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 एवं जो पॉइंट ए रु पॉइंट सी मध्य अच्छी ये पर्सन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 बाय इलास्टिक पर्सन होता है और ये पर्सनटा होची
in elastic portion, point C to point E टा. Okay, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला ऑलरेडी एटा हमें नेगेटिव नहीं कि करि थाओ, किंतु जेतेले हमें वैल्यू टाको हमें कैलकुलेट करथो हमें नेगेटिव साइन टाको हमें कंसीडर करूनी, हमें ताको इग्नोर करथो. सो सेति पई आंसर 1 टा करेक्ट हबो. नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 रे अछि the price elasticity of demand for two straight line demand curve which are parallel to each other will be equal, whether this statement is true or false. जेतेबेले आमे दुईटा डिमांड कर्व आमे काटुछे एवं ड्रॉ करूछे तार पैरेलल जदि अछंती तो सेटा इलास्टिसिटी इक्वल होबो ना डिफरेंट होबो. एक्चुअली इलास्टिसिटी विल नॉट बी इक्वल, इट इज फॉल्स. तो आंसर इज बी फॉल्स. ओके, देखंतु एटा मैं एक्सप्लेनेशन दे देछि. करेक्ट आंसर इज बी फॉल्स because आमे जानते elasticity of demand is nothing but the what dq by dp which is into PYQ. यह होची फॉर्मूला. एटा होची हमर स्लोप. dq by dp is nothing but the what slope. स्लोप सेम अछि, जदि पैरेलल अछि इट मींस स्लोप सेम अछि, किंतु p by q जो अछि p by q में भी चेंज ही पारे. तो सेति पई तो एटा फॉल्स ऑफ आंसर टा. काहे कि ना p by q चेंज ही पारे, स्लोप में भी सेम ही पारे, बट p by q डिफरेंट जगह डिफरेंट हो पारे. ओके, तो सेति पई द इलास्टिसिटी विल नॉट बी रिमेन सेम. देखो तो एटे मु डायग्राम दे देछि. द डिमांड कर्व हैविंग सेम स्लोप may have the different elasticity and the demand curve having different slope may have the same elasticity both at the given prices. देखो तो एटा गोटे डायग्राम अछि. ए डायग्राम द डिमांड कर्व विथ द डिफरेंट स्लोप्स एंड सेम इलास्टिसिटी. एटे इलास्टिसिटी इक्वल टू सेम रहइबो बट द स्लोप इज डिफरेंट. Here slope is different but elasticity is same. Elasticity is same. But एति देखिबा हम जदि slope same अछि but elasticity is different अछि. Okay, तो ये डायग्राम को हम देखि देबा. क्लियर. नेक्स्ट हम जेबा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, when the price of a product rises consumers shift their purchases to other products whose prices are now relatively cheaper. देखंतु हमें जितेबले फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ एक्स हमें नो, प्राइस ऑफ एक्स राइजेस एंड द कंज्यूमर शिफ्ट देयर परचेजेस टू अदर प्रोडक्ट्स. इट मींस कंज्यूमर कोन करछे तार कंजम्पशन कहार बढ़ुछि, वाई रो कंजम्पशन जदि बढ़ुछि. क्लियर. काहे कि ना वाई रो कंजम्पशन बढ़ुछि बिकॉज़ द प्राइसेस ऑफ द वाई become relatively cheaper. Okay, therefore the consumer will prefer y rather than the good x. Even if the prices of the y is constant, but it will relatively be cheaper. Therefore the consumer will prefer the commodity y rather than the commodity x. So this concept is known as substitution effect. या को हम कोन कहताउ substitution effect बोले हम कहताउ. जेमति कि हम टी रो हम जदि नम चार जदि प्राइस हम जदि बढ़ुची देन कॉफी रो डिमांड टा कोन होइबो, कॉफी रो डिमांड टा बढ़ी जीवो. ओके, क्लियर. काहे कि ना देखंतु कॉफी रो प्राइस समान थिले भी कॉफी रो डिमांड बढ़ी जो बिकॉज़ चार रो डिमांड कोन होची चार रो तामना प्राइस टा कमी छी. क्लियर. देयरफॉर द आंसर इज P, substitution effect. क्लियर. तो देखंतु when the price of the good increases the consumer often switch to other goods because it serves by the similar purposes and now the relatively cheaper. The behavior is known as the substitution effect. यदि इनकम इफेक्ट कौन होता है, इनकम इफेक्ट रियल परचेजिंग पावर टा चेंजेस होता है. ओके, इट मींस हम जते इनकम इफेक्ट हम देखिबा इनकम इफेक्ट कौन हो जे रेफर्स टू द चेंज इन द प्राइस दैट रिजल्ट्स इन द चेंजेस इन द परचेजिंग पावर. एंड परचेजिंग पावर जते बेले इंक्रीज करूची तो बोथ एक्स किमा वाई गुड रो इंक्रीज करबार चांसेस थाए. ओके, नले कोनोसी गुटे भी गुड्स इंक्रीज करि पारे. तो एठी ऑप्शन टी होबा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज when the pricing strategy is first degree price discrimination the consumer surplus is. हम जानि छे कंज्यूमर सरप्लस द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जीरो होता है बिकॉज टेक इट और लीव इट सिचुएशन थाए. तो कंज्यूमर जते भी से देवा पई चाहता है सेही प्राइस ही चार्ज करता है गोटे मोनोपोली. ओके, सो देयरफॉर नथिंग एल्स रिमेन एज कंज्यूमर सरप्लस इन द हैंड ऑफ द कंज्यूमर. सो द आंसर इज इक्वल टू 0. द कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू 0. ओके, here is the explanation. It explanation दिया है. The correct answer is equal to 0. The first degree price discrimination is also known as the perfect price discrimination, which occurs when a seller charges each consumer the maximum price they are willing to pay for each unit of the
good. Since the consumer is paying the exactly what they are willing to pay, they gain no additional benefit or the surplus from the purchase. Therefore, the consumer surplus is captured by the producer as the profit. So hence, the consumer surplus in this case is 0. Okay. Next question ku jiba ame question number 7. Question number 7 रे दिया है a monopolist maximizes her profit by producing a quantity at which the profit maximizing condition of the monopolist ame कौन देखो there are two approaches. One is MR or MC approach, another is TR and TC approach. Okay, our question देछि MR and MC approach এবং MR and MC approach हिसाब रे MR is equal to MC जिते बेले हुए MR when the marginal revenue just equal to the marginal cost, so in that case the profit get maximized. Okay, so it is the case of every market. It may be perfect competition, it may be your monopoly. Okay, so this is the answer B. Marginal revenue is equal to marginal cost. Why other option is not correct? Because देखो तो एटी जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए रे जो दिया है MR is equal to price, which is nothing but the what MR equal to AR टा monopoly रे केते बेले हबो एटा perfect competition रे हबो because काहे कि ना monopoly रे always AR is greater than MR होय थाए. Clear? এবং marginal cost equal to price, MC is equal to price जो अछि MC equal to price. This is also a case of the perfect competition, but this is not possible in case of the monopoly. Clear? And the marginal revenue equals the average revenue. आम जानी MR is equal to AR टा होची केवल perfect competition रे हबा because AR is always greater than MR in the imperfect competition or the monopoly. Okay, so therefore option B is the correct answer. Marginal revenue equals marginal cost. Next come to question number 8. Imagine a budget constant with go to Y on the vertical axis. Let me draw. Go to Y on the vertical axis and good X on the horizontal axis. Here good X, here good Y. Clear? How would that budget line be affected if the price of both the goods decline proportionately? So first of all, when the price of both the goods will decline, price of X and price of Y both decline proportionately, it means same proportion, then कौन होगा बजट लाइन कुआडे शिफ्ट करबा बजट लाइन राइट वार्ड शिफ्ट करबा बजट लाइन राइट वार्ड शिफ्ट करबा काहे कि ना बजट लाइन राइट वार्ड शिफ्ट करबा बिकॉज जो परचेजिंग पावर अच्छी परचेजिंग पावर टा इंक्रीज करबा. ओके, जदि हमर ओरिजिनल बजट लाइन थिला B1 L1 थिला. क्लियर? एबे प्राइस फॉल करिवार द्वारा इंटरसेप्ट भी सेम हम पैरेलली शिफ्ट करबो हम पैरेलली शिफ्ट करबो कोटिबो B2 L2 रे शिफ्ट करबो इट मीन राइट वार्ड शिफ्ट करबो बजट लाइन विल शिफ्ट राइट वार्ड एवं पैरेलली शिफ्ट करबो पैरेलली काहे के शिफ्ट करबो बोथ द प्राइसेस प्रोपोर्शनेटली बा सेम रेट रे चेंज होई. ओके, सो द आंसर टा कोन होबा देखो आंसर टा बी. द न्यू बजट लाइन विल बी पैरेलल टू द ओल्ड बजट लाइन बट विल शिफ्ट टू द राइट. सो आंसर करेक्ट आंसर इज बी. देखो एटी एक्सप्लेनेशन दिया है. क्लियर? नेक्स्ट ला क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन ए मोनोपोली मार्केट विल ऑलवेज जनरेट. तो देखो तो ये आम डायग्राम आम ड्र कर बहुत परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली रो. लेट मी ड्र द डायग्राम. Here we will take the price, here we will take the quantity. Okay, let आम जानी छे परफेक्ट कंपटीशन रे प्राइस इज व्हिच इज इक्वल टू AR और व्हिच इज इक्वल टू MR होता है एवं मोनोपोली रे कोन होता है दिस इज द AR कर्व एवं MR कर्व टा अंतर होता है. ओके, एटा मोनोपोली हला एटा परफेक्ट कंपटीशन हला पीसी बा कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो आम जते बेले मार्जिनल कॉस्ट कर्व आम ड्र करूची लेट द मार्जिनल कॉस्ट कर्व बी इन दिस वे मार्जिनल कॉस्ट कर्व. तो एठी हला आउटपुट जो होबो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन MR इज इक्वल टू MC. तो परफेक्ट कंपटीशन रे एटा हला कॉम्पिटिटिव आउटपुट किंतु मोनोपोली आउटपुट हला कोटा एटा हला मोनोपोली आउटपुट एवं प्राइस जते बेले हम नै जिबा मोनोपोली प्राइस PM एटा हला कॉम्पिटिटिव प्राइस. तो हम जदि देखिबा एठी हम जदि देखिबा द प्राइस ऑफ द मोनोपोली प्राइस इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटिव मार्केट and the quantity of monopoly quantity is less than the quantity of the perfect competition. So एक केस रे जदि हम जीवा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ए लोअर प्राइस sorry option A is correct answer because a higher price and a lower output because price is greater than and output is lower.
तो ये है आमर देखो ये एक्सप्लेनेशन कम्प्लीटली दिखाई यू कैन चेक इट नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस देखो आम जब देवा अकाउंटिंग प्रॉफिट गोटे अच्छे आ गोटे आम नहीं इकोनॉमिक प्रॉफिट जिते आम अकाउंटिंग प्रॉफिट आम कैलकुलेट करुचे एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आम देखा एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आम टोटल कॉस्ट इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट आम नहीं था कि जिते आम इकोनॉमिक प्रॉफिट आम कैलकुलेट करुचे बोथ एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को आम कंसीडर करता ओके सो देयरफॉर आंसर इज डी हियर बिकॉज आम टोटल रेवेन्यू ओनली आम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आम डिडक्ट कर So the correct explanation is given. Accounting profit is the profit reported in the financial statement. It is calculated that accounting profit is equal to total revenue minus explicit cost. कि जदि आम इकोनॉमिक नहीं था ताहले इम्प्लिसिट कॉस्ट में इनक्लूड होता था क्लियर ओके सो दिस इज द आंसर आई थिंक आपण मानको ए वीडियोटा हेल्पफुल होइतबो कांसेप्ट माने आपण माने जानि परिथिबे अपकमिंग वीडियो रे आम पुणी नेक्स्ट जो 11 रू नहीं कि आम 20 जाए आम क्वेश्चन पेपर आम डिस्कसन करवा तो यह हिसाब से आम टोटाल 100 जेहेतु क्वेश्चन अच्छी तो 10 लेक्चर आम ताको टोटाल कंप्लीट करवा ओके और मैथमेटिकल नंबर जहाँ अच्छे से मैथमेटिकल नंबर मैंने सब गोटे सेपरेट मो वीडियो माध्यम आपको जोगेदेवी ठीक अच्छे थैंक यू।